बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs फ्रॉम द पोएम द सॉलिटरी रीपर। ये वीडियो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो ओवरऑल MCQs है इस पोएम के उनको, और फिर दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के MCQs को, यानी कि पिछले 20 साल के जो पेपर्स हैं, 10 साल के कॉमर्स के और 10 साल के साइंस के, उसमें इस पोएम से रिलेटेड कौन कौन सी MCQs पूछे गए हैं इसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि आप जानते हैं कि इस साल 2022 के जो पेपर्स होंगे, एग्जामिनेशंस होंगे, उसके अंदर MCQs 40% होंगे। और इंग्लिश का पेपर चूंकि 100 मार्क्स का है तो आपके 40 MCQs सिर्फ लिटरेचर से होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एंड तक केयरफुली और थॉरली देखिए। प्रैक्टिस करना चाहें प्रैक्टिस कर लें, सुनना चाहें सिर्फ सुन लें, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलते हैं MCQs की तरफ। द पोएम द सॉलिटरी रीपर was composed by William Wordsworth, William Shakespeare, William Blake, William Christopher. William Wordsworth was born in 1770, 1660, 1880, 1881. The composition of the Solitary Pair was a result of Wordsworth's tour of outskirts of Scotland, Hebrides of Scotland, Highlands of Scotland, suburbs of Scotland. आप इस वीडियो को पॉज करके पहले अपने जवाबात लिख लें और उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the answers. The poem The Solitary Pair was composed by William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770. The composition of the Solitary Pair was a result of Wordsworth's tour of Highlands of Scotland. अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पोएम्स की जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है द 7 Ages of Man by शेक्सपियर, उसकी वीडियो भी यूं ही आप पास पेपर्स के साथ देख सकें तमाम तरह MCQs, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन है उसे क्लिक करके उस पोएम के MCQs भी आप देख सकते हैं। William Wordsworth toured the Highlands of Scotland in the company of one of his contemporaries. होना चाहिए था ये his sister Dorothy, his brother, none of these. The poem The Solitary Pair was composed in 1784, 1805, 1986, 1951. The Solitary Pair is a or an a lone girl, a lonely shepherd, lonely man, lonely witch. आप अपने आंसर्स को लिख लें एक जगह पे, इस वीडियो को पॉज करके उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the right answers. 4 का है William Wordsworth toured the Highlands of Scotland in the company of his sister Dorothy. 5 है the poem The Solitary Reaper was composed in 1805. The Solitary Reaper is an alone girl. अगर आप चाहते हैं कि अपनी पोएम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट के भी इसी तरह से MCQs along with past papers आप देख सकें, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन मौजूद है उसे क्लिक करें और वो पोएम के MCQs भी आप देख लें। The Solitary Reaper was cutting and binding crops and was looking at poet, singing a song, crying loudly, shouting loudly. The Solitary Reaper was singing a song that was joyous, melancholy, rocking, boring. The poet compared the girl's voice with 2 flowers, birds, cuckoo and nightingale, singers, opera singers. आपने इसको आंसर करने के लिए वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपने आंसर्स को लिख लें एक नोटबुक में और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक करना। Here are the answers. The Solitary Reaper was cutting and binding crops and was singing a song. The Solitary Reaper was singing a song that was melancholy. The poet compared the girl's voice with 2 birds, cuckoo and nightingale. अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पोएम जिसका नाम है सैमसन एगोनिस्टस, उसके भी MCQs इसी तरह से along with past papers आप देख सकें, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन शो हो रहा है उसे क्लिक करें और उस पोएम के भी MCQs आप देख लें। The poet thinks that the voice of the girl is more charming and thrilling than cuckoo and nightingale, a good ballad singer, minstrel, a good and popular musician.
Breaking the silence of the sea among the farthest Hebrides. Hebrides means herbs in Highlands. Highlands. Island of Scotland, deserts of Scotland, forest of England. The poet could not understand the song because the girl was singing in Cornish, Gaelic, Welsh or Briton. आप अपने आंसर्स को लिखने से पहले वीडियो पॉज करें, आंसर्स लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the correct answers. The poet thinks that the voice of the girl is more charming and thrilling than cuckoo and nightingale. Breaking the silence of the sea among the farthest Hebrides. Hebride means island of Scotland. The poet could not understand the song because the girl was singing in Gaelic. आपकी बुक की जो पोएम है, फोर्थ पोएम जिसका नाम है एन एसे ऑन मैन, अगर आप उसकी वीडियो भी यूं ही देखना चाहते हैं जिसमें MCQs हैं along with past papers, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन है उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं. The poet assumes that the girl was singing an old verse, tragic verse, funny song, loving song. The poet was much moved that he felt the song of the girl has no wordings, sense, ending, pretensions. The tool used by the solitary reaper mentioned in the poem is spade, shovel, sickle, hammer. आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को लिख लीजिए और उसके बाद इसे रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the right answers. 13 में है ट्रेजिक वर्स, 14 में है एंडिंग और 15 का आंसर है सिकल. अगर आप चाहते हैं कि जो पोम है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, उसकी वीडियो भी आप यूं ही पास्ट पेपर्स के साथ देख सकें, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन है उसे क्लिक करके वो पोएम भी आप देख सकते हैं. When the poet had left the place, he could still feel the charming voice of the girl, enjoy the journey, mount up the hill, not understand her. Wordsworth is known as the poet of England, children, nature, Scotland. The word Highland refers to rich areas of Scotland, posh areas of Scotland, upper class of England, mountainous region of Scotland. आपने इस इन MCQs को आंसर करने के लिए वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लेने हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स देख सकते हैं. Here are the right answers. When the poet had left the place, he could still feel the charming voice of the girl. Wordsworth is known as the poet of nature. The word Highland refers to the mountainous region of Scotland. Arabian sand refers to meadows of Scotland, meadows of Arabia, islands of Scotland, deserts of Arabia. Sherryhaunt refers to meadows of England, bowers of Scotland, islands of Scotland, oases of deserts of Arabia. Humble means or an harmonic lay, harmony spread somewhere, song of merriment, ordinary song. आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लें और उसके बाद रिज्यूम करके अपने आंसर्स को टैली कर लें. Here are the right answers. Arabian sands refers to deserts of Arabia. Sherryhaunt refers to oases of the deserts of Arabia. Humble lay means an ordinary song. अब हम अपनी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में दाखिल होने जा रहे हैं. दैट इज द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस पोएम. यानी कि पास्ट पेपर्स में ये पोएम कितनी दफा और कैसे पूछा गया है, इससे MCQs इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन उससे पहले ये आपकी स्क्रीन पे कुछ बहुत अहम बातें हैं. आप सबको पता है दीज आर द फॉर्मेलिटीज ऑफ यूट्यूब वीडियो. ये सारी चीजें आप यकीनी तौर पे करेंगे, लेकिन एक गुजारिश आपसे जरूर है कि इस पोएम को या इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. चलते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ. अगर आप चाहते हैं कि पोएम इंडियमन के भी MCQs इसी तरह से आप देख सकें ओवरऑल अलोंग विद द पास्ट पेपर्स, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन है वहां पे इंडियमन पोएम के भी वीडियो आपको मिल जाएगी. यहां पर हम बात कर रहे हैं कि साइंस में ये MCQs, साइंस के पेपर्स में इस पोएम से रिलेटेड MCQs कौन कौन से आए हुए हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं. Wordsworth wrote the solitary reaper when he saw a girl reaping crop in a field, singing in a field, cooking food alone, addressing people. No nightingale did ever chaunt is the line from the poem An Essay on Man.
Samson Agonistes, Endymion, the Solitary Reaper. The music in my heart I bore long after it was heard no more. These words have been written by John Keats, P.B. Shelley, Wordsworth, Alexander Pope. In the poem The Solitary Reaper, William Wordsworth compared the singing of the girl with that for A or N, nightingale, eagle, sparrow or hawk. आपने वही काम करना है जो आप हमेशा करते हैं. वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर्स को लिख लें और उसके बाद इससे रिज्यूम करके आप अपने आंसर्स को चेक कर लें. Wordsworth wrote The Solitary Reaper when he saw a girl reaping crop in a field. No nightingale had ever chaunt is the line from the poem The Solitary Reaper. The music in my heart I bore long after it was heard no more. These words have been written by Wordsworth. In the poem The Solitary Reaper, William Wordsworth compared the singing of the girl with that of a nightingale. देखते हैं कॉमर्स में इस पोएम से रिलेटेड कितने MCQs पूछे गए हैं. इसमें खासे आए हुए हैं, देखते हैं. इसमें The music in my heart I bore long after it was heard no more is the experience of Wordsworth, Shakespeare, Blake, P.B. Shelley. The Solitary Reaper sings in English, Gaelic, French, Italian. The song The Solitary Reaper is compared to the song of Nightingale and Sparrow, Nightingale and Cuckoo, Cuckoo and Owl, Cuckoo and a Sparrow. I saw her singing at her work. Here I means Wordsworth, Shakespeare, Blake, Shelley. Hebrides mentioned in The Solitary Reaper are islands, deserts, oceans, mountains. The line and sings a solitary song consists of a or an simile, metaphor, alliteration, personification. आप अपनी वीडियो को पॉज करें और अपने जवाबात को लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके उन जवाबात को सुन लें. The music in my heart I bore long after it was heard no more is the experience of Wordsworth. The Solitary Reaper sings in Gaelic. The song The Solitary Reaper is compared to the song of Nightingale and Cuckoo. I saw her singing at her work. Here I means William Wordsworth. Hebrides mentioned in The Solitary Reaper are islands. The line and sings a solitary song consists of an alliteration. लास्ट टू आपके पास ये MCQ है कॉमर्स से ही. The poem The Solitary Reaper is composed by Wordsworth, Shakespeare, William Blake, Percy Shelley. In the poem The Solitary Reaper, William Wordsworth compared the singing of the girl with that of a or an eagle, nightingale, sparrow or hawk. आप इन आंसर्स को लिखने के लिए इस वीडियो को पहले पॉज करें और उसके बाद अपने आंसर्स लिखकर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. The poem The Solitary Reaper is composed by Wordsworth. Right answer is Wordsworth. In the poem The Solitary Reaper, Wordsworth compared the singing of the girl with that of nightingale. ये वीडियो यहाँ पे तमाम होती है और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पोएम के MCQs के साथ, किसी नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.